Okay, so good morning, students. Okay, so yesterday in the last class, we have discussed about the electric dipole. Okay, we have started our discussion regarding the electric dipole. So we have covered our discussion up to here. So the potential at a particular point P, how to calculate it using a dipole. That means the potential at a particular point P due to the effect of the dipole was discussed. Now,
uh, as we were discussing regarding this particular area, that this is the cos, this is an angle. Okay, this is actually a theta angle. So considering that this particular length is this r1 is shorter than r2, or r2 is greater than r1. So means we have r1, then we have r which is greater than r1, and we have r2 greater than r as well as r1. Now if you want to take the same distance, same length, suppose r1, that means this point to p, then from the middle point to p and third point to p, so we want to take the same length, so we can draw a line like this, considering that whatever remaining portion is there, this is the excess amount. Okay, so once we draw this line, we get a right angle triangle. Accordingly, we can conclude that this is, if this is distance between the two charges, there is a dipole, is d. Okay, then this length is nothing but d cos theta. Okay, so if this is the 90-degree angle, so this is theta. Okay, so now this d cos theta is nothing but the d dot product with a unit vector r. That means this d cos theta, because see, this displacement is a vector. We all know that displacement is a vector. Okay, now suppose we are finding a dot product r with it. Okay, what is r? R is again this displacement. Okay, this is the length actually. So this length is r, this is the magnitude, but the vector r is not mentioned over here, because what we are considering over here, this is actually the magnitude of the length, that is from this middle point to point p. Okay, this is the length r, this is the magnitude. So r magnitude is nothing but r, is represented like this, but a vector r is actually equals to magnitude into some unit vector. Unit vector is the direction in which the vector is propagating or traveling. So d dot that particular vector will give us this length. That means the distance d is along this axis, but the r is along this axis. So if I merge them, if I multiply the dot product, then I will get this distance. So this distance is the scalar. Okay, so that is why it is this scalar d, because it is d cos theta. Okay, d cos theta, because d vector is equals to d is the magnitude, and there is a unit vector along with it, suppose d, which is not utilized over here, but it is having a unit vector. Now if you do this dot product, so it means this magnitude multiplied by 1 into cos angle between them. Okay, that is why it is told that this d cos theta is nothing but d dot unit vector r. Okay, so where d is the d unit vector z, so this one will be z. Okay, I am correcting it, this one will be z. Why? Because the distance d is along the z axis, so the axis is having a unit vector d. So that means this distance is a vector, this gap is a vector, which equals to magnitude, length in centimeter, meter, whatever, and with a unit vector z. Okay, and this distance r is also a vector, which is equals to length r, which is used in the calculation, and unit vector r, no dot product actually, unit vector r. Now if I find the dot product between this vector and this direction, then I will get the length along the direction of r. That means d का जो distance है वो वेक्टर जो है वो z एक्सिस के बराबर है, लेकिन हमको ये लेंथ मेजर करना है, तो ये लेंथ जो है वो d का लेंथ है, लेकिन ये r वेक्टर के बराबर है, इसलिए हम लोग d वेक्टर को और r यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. You are getting d cos theta because the angle between them is theta.
Okay. So now using this we define a term, a value which is called P equals to QD. That means Q is the charge, magnitude of the charge of the two charges. That means both the charges are having plus Q minus Q. That means both are having the same magnitude of Q. Q is the magnitude, but opposite signs. So Q is the charge, equal magnitude charge of the 2 point charges. Okay. So now distance is D. डिस्टेंस इज डी, डिस्टेंस जो है वो डी है। तो एक मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्जेस होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सो इफ यू टेक दिस मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस देन वी गेट द वैल्यू विच इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। इट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट, दैट इज द इफेक्टिव एंटिटी। ओके, टोटल एंटिटी इज डाइपोल मोमेंट। So Q into D. So in this equation you can see we have Q and D along with us, ठीक है। तो Q और D को हम लोग लिखेंगे P cos थीटा, मतलब Q D को हम लोग P रिप्लेस करें तो बाकी का इक्वेशन सही रहेगा, एक ही रहेगा। ओके, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दिस वन विथ P। ओके, P cos थीटा। ओके, नाउ P cos थीटा। नाउ अब तुम पूछ सकते हो कि ये जो चार्ज है, ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, D जो है ये वेक्टर है, तो P क्या रहेगा? P जो है डाइपोल मोमेंट, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। P इज ऑल्सो वेक्टर, दैट इज वाई P इज अ वेक्टर। सो इफ इट इज यू आर राइटिंग इन दिस वे दैट P cos थीटा, सपोज आई एम ओनली टेकिंग द न्यूमरेटर पार्ट, P cos थीटा, ओके, न्यूमरेटर पार्ट। Okay, so P cos theta means if P is a vector, because P is nothing but the product of a scalar and a vector, so obviously this will be a vector, obviously. Okay, so P is a vector and it is multiplied, because ये जो P हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये जो P लिखा है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि because this is a highest, because in this particular field theory, okay, we are not representing like mathematics, because it is understood that any vector is equals to the magnitude and a unit vector. Okay, unit vector, any vector has a magnitude and a unit vector. So over here we are representing the magnitude with P, with magnitude with P. Okay, but normal we are not using the mod sign, mod को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वेक्टर को भी कैप नहीं लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन वेक्टर को कैप नहीं लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग मान लो कि डॉट प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि A डॉट B, तो ऑटोमेटिकली ये वेक्टर ही है, तो वेक्टर के बिना डॉट प्रोडक्ट तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग कैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक वैसे ही ये जो है ये है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। द इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, इन मेनी बुक्स यू विल फाइंड द इक्वेशन रिटन लाइक दिस, मैग्नीट्यूड। बिकॉज whenever you are writing an expression equation where you are not using the dot product or cross product, then automatically the variable is a magnitude, only magnitude of the vector. So P जो है वो वेक्टर P का ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के ऊपर लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ रहा है हमको कि ये वेक्टर ही होगा, बिकॉज दिस विल बी अ वेक्टर, बिकॉज वंस वी आर राइटिंग इन रेस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी अ वेक्टर and it is represented in the vector form itself. It is not represented in the magnitude form. So in this case it is represented as vector. So don't get confused, because when I'm explaining or writing I am using this cap and I am using this mod value, but in the notes you will not find this, because I am not using them, because I am just going as per the book, because it is required for you. Because the questions also, whenever you will encounter face the questions, you will see that in the exams these cap and mod values are not given, because it is understood that a student has done this concept of vector in schools and mathematics. It is understood that whenever a vector is represented, it will have a magnitude and a unit vector, obviously. But when we are writing in terms of equation, suppose this plus this, A plus B, okay, now automatically it is
the magnitude part of the vector, but not a scalar, magnitude part of the vector. But once we are writing like this, say suppose a plus b, that means a plus b equals c, that means this is, suppose it is told that it is a vector, so automatically this is vector, means not, we are not adding them directly like this, it is the magnitude. But whenever writing like this, a dot b, that means we are representing in the vector form. Okay, we are representing in the vector form. So coming back to the discussion, that in the numerator we have p cos theta, we have p cos theta, because we are replacing q with p, so p cos theta. So p is the magnitude, okay, magnitude. Now if p is the magnitude, okay, I will not use this cap, so it is the magnitude only, okay. अभी जो मैग्नीट्यूड है वो एक मैग्नीट्यूड के वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ अगर cos थीटा जोड़ा गया है, तो मतलब के इट इज अंडरस्टूड दैट p cos थीटा मीन्स it is nothing but the vector p dot some unit vector whose magnitude is 1, okay, and the theta is the angle between them. So what is the unit vector? The unit vector is r. Why? Because this vector p, from where we are getting this vector p, यहाँ पर physics को समझना है, is very important. Because if I draw in this way, because this is very important, why we are writing p like this, p is equals to p cos theta, why we are writing as p unit vector r, because there is this reason that this was the suppose this is the distance, okay, this is the distance, okay. So we have the distance d like this, okay, we have the distance d, this is charge q, this is minus q plus q, ये जो distance है ये d है, और ये है यूनिट वेक्टर, ये है z एक्सिस, ठीक है. अब जो d जो है ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर. नाउ द particular dipole moment is q into d. Q is the magnitude of the charge, d is the distance, magnitude of the distance. Q is the charge, quantity of charge, and d is the magnitude of the distance. So this is a magnitude of the dipole moment. But it is understood that whenever you are writing in the form of a vector, that means this particular dipole moment has to be a vector because it is in association with a vector. ठीक है. अब हम तो ऐसा नहीं लिख रहे कि P इज इक्वल्स टू मान लो A क्रॉस D. उसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यही होगा कि A का कोई मॉड वैल्यू है, मान लो छोटा a, और D का वैल्यू है मॉड, और साइन फाई होगा, और एक यूनिट वेक्टर होगा रो नाम का होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है. दो वेक्टर के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो तीसरा जो होता है थर्ड जो यूनिट वेक्टर आएगा रिजल्टेंट का, वो परपेंडिकुलर होगा. बट वी आर नॉट राइटिंग इन दिस वे, वी आर ओनली राइटिंग दैट रो इज अ वेक्टर, so p is a vector and it is equals to q into d. So this is a vector, this is a vector, so that means this p vector is along the direction of d. So d जहां जहां जाएगा p भी वही है, ठीक है. तो मतलब p का जो डायरेक्शन है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, वो भी यूनिट वेक्टर z ही होगा, q के d के लिए वही होता है. कैप दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं दे रहा हूं क्योंकि समझने के लिए, ठीक है, यही होता है. तो दैट मीन्स द p is along the direction of d. Now in our case you can see that r is a vector which is making an angle theta with d. So r is a vector which is making an angle theta with d, okay, like this. It is making an angle theta with d, this r. So it will also make an angle theta with p also. Why? Because p is also in this direction. p भी तो यही है, p तो यही पर है, ठीक है. p का वैल्यू कितना होगा, मान लो कि q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो q का वैल्यू है 2 कूलम, तो d है, d मान लो है 4 मीटर सपोज, तो p क्या होगा, p होगा 8 कूलम मीटर, ठीक है. तो मतलब p का वैल्यू यहां पर है 8,
suppose. So this angle theta which is obtained between r and d, this if I extend this particular r over here, इसको हम लोग ऊपर अगर ले जा रहे हैं क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर का डायरेक्शन तो एक ही रहेगा, यहाँ पर भी थीटा होगा, तो मतलब पी के साथ आर का भी वैल्यू थीटा ही है क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि वेक्टर है ना, ये चीज वेक्टर है, तो आई कैन शिफ्ट इट बट आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। आर को यहां से ऐसा नहीं लिख सकते, भाई ऐसा नहीं लिख सकते, आर को ये ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डी के साथ थीटा है तो पी के साथ भी थीटा होगा। तो फिर हम लोग का जो इक्वेशन था कि पी कॉस थीटा, तो मतलब पी जो वेक्टर है उसको वेक्टर के हिसाब से अगर लिखे तो पी डॉट, अब थीटा किसके साथ है, आर के साथ, आर का यूनिट वेक्टर क्या है, ए आर, तो मतलब अगर ऐसा नहीं कि आर होता तो हम लोग तो पी डॉट आर बोलते क्योंकि पी के साथ और कुछ नहीं है, पी ओनली कॉस थीटा, दैट मीन्स द वेक्टर विच इज देयर, दैट मीन्स जो वेक्टर है जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद पी कॉस थीटा मिला है, पी का मतलब पी एक वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है वो गायब है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, तो ये मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो मतलब वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, और कौन सा यूनिट वेक्टर है, जिसके साथ पी का थीटा डिग्री डिफरेंस है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज पी यूनिट वेक्टर आर। Okay, so that is it is written as p unit vector r. So the equation that is qd is replaced as p cos theta, so p cos theta is written as p dot unit vector r. Okay, now note that the dipole moment p is directed from minus p to plus p, that means the dipole moment is a vector, इसलिए ये term लिखा है directed because it is also a vector from minus q to plus q, that means it is also upwards, so it is also having a unit vector z. Okay, if the center is not at the origin but r dash, सेंटर मतलब कि सेंटर जो है इसका डाइपोल का सेंटर जो है वो ओरिजिन में नहीं है, मान लो यहाँ पर जो है वो ओरिजिन में दिखा गया है, यहाँ पर जो है इसको हम ओरिजिन में दिखाए हैं, ठीक है, इसको ओरिजिन में दिखाया गया है, मान लो कि ओरिजिन में नहीं होता तो फिर कैसा दिखता, अगर ऐसा होता सपोज, ओके, बट द डाइपोल is over here, this is plus q, this is minus q, and this distance is d, so the center will be suppose r dash. So center r dash means center is something like that. Okay, so the dipole, ये जो होगा, ये equation जो change होगा, so this equation will be r minus r dash. Okay, r minus r dash, this equation. सेंटर मतलब ये डिस्टेंस, सॉरी सेंटर मतलब एक सेकंड, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है r डैश मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक अगर r डैश होता है तो r डैश मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेक्टर, तो r डैश भी ऊपर की तरफ ही होगा आधा, क्योंकि r डैश मान लो d/2 है, तो r डैश भी ऊपर की तरफ है, और ये वेक्टर है r1, ये वेक्टर है r, ये वाला ऐसा है, और ये ऊपर की तरफ है, तो समेशन होगा कि इस वेक्टर को ऐड करके हमको ये वेक्टर मिल रहा है, मीन्स वी आर एडिंग these two vectors to get r vector, so that means r vector, okay, is equals to r1 plus r, or r dash, okay, so r dash is nothing but r minus r dash, yes, so r1 is nothing but r minus r dash, ठीक है, that is why you are writing r minus r dash, और ये वेक्टर के हिसाब से लिख रहे, यूनिट वेक्टर को हटा के वेक्टर लिख रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर r जो है वो है r माइनस r डैश, ठीक है।
Now the electric field due to the dipole with center at the origin. अब potential तो निकल गया कि how to determine the potential from a electric dipole that we have seen. That means there is a point P and there is a electric dipole. So what is the potential of the particular point due to the dipole that we have observed? Okay. Okay, so that we have observed. Now the electric field intensity you have to calculate. अब जब हमको पोटेंशियल मिल गया तो फिर बाकी सब भी मिल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल है. ठीक है. अब ये भी सही है कि अगर इसको ये इंटीग्रल फॉर्म में, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो ये है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग minus of gradient of v. So we will take the minus of gradient of v. Okay. So we have only unit vector r and unit vector theta because in our spherical coordinate system, यहाँ पर जो spherical coordinate system है, यहाँ पर radius r कंसिडर किया गया है और थीटा कंसिडर किया गया है, फाई नहीं है, क्योंकि एक spherical coordinate system में क्या होता है, एक रेडियस होता है और एक एंगल होता है थीटा. ठीक है, रेडियस होता है और उसको हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर जाके निकलता है कि ये कितना एंगल फाई हमको देगा. तो यहाँ पर फाई का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यूज नहीं है, सो दैट इज विल नॉट कंसिडर फाई. ओके. सो आफ्टर कैलकुलेशन इन दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वी गेट दिस सॉल्यूशन. ओके, वेयर दिस p is the dipole moment, okay, which is the vector, and mod value is qt. Okay, mod value is qt. Note that a point charge is a monopole and its electric field varies inversely as r square, while its potential field varies inversely as r. That means the point charge is a monopole. That means q can exist single because it is not always necessary that the charges will be in dipole format. A single charge can exist. So that is the difference between an electric field and magnetic field. The magnetic field has a magnet which is having two poles, north pole and south pole. Okay, but electric field has only one. Electric field can exist due to one charge itself, but you can also create dipole also. Okay, so electric field varies as inversely as r square. Okay, inversely as r square, it varies, while potential varies inversely as r. This is the potential inversely as r. The equation 4 and 6 we notice that electric field due to dipole inversely varies r cube while its potential varies r square. तो सिंगल चार्ज जब होता है तब हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है इनवर्सली वेरियस r स्क्वायर और पोटेंशियल जो होता है वो 1/r होता है. अब जो डाइपोल लेते हैं हम लोग, ठीक है, QD, ठीक है, then we get electric field as inversely proportional to r cube and potential inversely proportional to r square, because since there exist two charges plus q and minus q, so this equation varies or changes. Okay, this equation changes due to the existence of a extra charge. Okay, so that means it can be concluded that electric fields due to successive higher order multipoles मतलब के दो चार्ज को लेके हम लोग डाइपोल बना रहे. अगर तीन चार्ज है, चार हो, ऐसा मल्टीपल है, तो ऐसा मल्टीपल अगर हम स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, ग्रुप लेंगे, झुंड लेंगे, तो फिर क्या होगा कि as the number of poles increases, poles means the number of charges, combination increases, so the exponent will increase. So it will occur in pairs, it cannot occur in individually, it will occur in pairs, because consider two poles, okay, or octupole or two quadrupoles. That means plus q minus q, वापस minus q plus q.
ऐसा अगर एक स्ट्रक्चर है तो 4 है, तो उसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा means it will be r to the power 4, r to the power 5, it will increase like that. Okay, so idea of electric flux lines, electric field lines of force as they are sometimes called, because flux lines, was introduced by the famous scientist Michael Faraday in his experiment. Okay, electric flux is an imaginary path, so this is known to us. Electric flux is nothing but an imaginary path. So from dipole we can get very similar characteristic of these magnetic poles. डायपोल में मैग्नेटिक पोल की तरह से ऐसा दिखता है, ठीक है। ये देखो, ये एक मैग्नेटिक, ये मान लो कि सिंगल चार्ज, दिस इज सिंगल चार्ज, सो दिस आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, दिस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, so fluxes are coming out of the particular charge. So as per Gauss law, the total charge is equal to the total flux coming out from the charge, okay, and the Coulomb value will be same. So for a single pole, okay, or a unipole or single charge, the flux lines are coming out in this fashion. But when we have an electric dipole, in that case the flux lines are actually traveling just like the field lines of a electric a particular bar magnet. The flux lines will be having the nature just like the flux lines of a bar magnet for a dipole. Why? Because an electric dipole, when we have plus q, if I show over here, it will be easier. Suppose we have a plus q, and this but plus q flux lines will be field lines, okay, for this particular point charge. It will be coming out, okay, it will come out, okay, similar to this. But whenever we have another point charge which is minus of q, so in that case the field lines will not be like this, it will like this. It will start from here and it will enter over here. Why? Because there is some force of attraction, okay, because of the opposite polarity. Distance is d, distance is there, so there will be some field lines like this, okay, field lines will be like this. It will start originate from plus positive charge and end at negative charge, okay. So in other words, there are lines to which electric field density is tangential at every point. So D is electric field density, or electric flux density rather, flux density. So any surface on which the potential is same throughout is known as the equipotential surface. So whenever we have this particular charge, okay, so this charge is having some flux coming out from it, so the potential along this particular area will be unipotential, equipotential, because at any point potential will be equal, same, because potential is in the form of radius, okay, it is in the form of radius, it is in the form of radius, because if this is the radius, okay, one second. Okay, so that means if the charge is like this, so if the radius is r, suppose the total one, so potential at this particular radius outer surface will be same, it will not change, okay, it will not change, it will be same, okay, but potential at this particular surface also it will be same, this radius it will be same, it will not change. So that means if the radius which I am showing with the green line is same, then it is creating a circle like this. So whatever point you take on this particular circle, the potential will be equal. Similarly, if you take a
circle like this, the potential at any point of the red circle will be equal. So these are called the equipotential surface. That doesn't mean that red potential at red circle will be equal to green circle. No, potential at red circle will be same all throughout the circle, and potential of the green circle will be same all throughout the green circle. Here in this case, for a dipole, what happens? The fluxes are originating from positive charge and ending at converging at the negative charge. But individually they have equipotential surface also, but they are not like this. They become this. You can see this dash line दिख रहा है ना, तो ये शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज को घेर नहीं लेता है, क्योंकि ये देखो सेंटर में चार्ज है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो ऐसा नहीं कि इस ये मतलब कि फिगर ए में जैसा दिख रहा है कि प्लस क्यू मतलब पूरा प्लस क्यू को गोल करके, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज there is some another negative charge of equal magnitude, so it will shift. So in between there will be a line, okay, where there is no potential, okay, potential difference. So above that particular line the potential will be positive, and below the particular line the potential will be negative, and at this particular line potential will be zero, because it is the midpoint of the dipole. Dipole के center में midpoint में potential zero रहेगा, और वहां से शुरू होगा, ऊपर अगर जाएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नीचे अगर जाएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल हमको मिलेगा हम लोग। सो इन दैट केस आल्सो यू कैन ड्रॉ सर्कल्स लाइक दिस। सो फ्लक्सेस आर ट्रेवलिंग इन दिस वे, it is originating like this, isn't it? It is starting like this, not going in straight line, it is originating like this. So since it is originating in a circular manner, so that is why we are getting a circle in this fashion, okay. We are not getting concentric circles, we are getting a circle from a common point. So this is the difference, okay. Okay, so I'm ending my lecture up to here, okay. So I will continue this in the next class, because this is too much information, because this part is also not in the internal exam, so I'm not going too far, okay. So in next class I will continue with the next topic. Also, any questions, students, from the today's class or any previous class? Because I have already shared the syllabus with you for this lot. If you have any question regarding the old topics, then also you can discuss. कोई question है पुराने topic से related? सर अप टू मॉड्यूल 10 तक इंटरनल एग्जाम में आएगा ना? मॉड्यूल 10 नहीं, वो नोट 10। गूगल क्लासरूम में क्या दिया है याद नहीं आ रहा। नोट 10 है ना, नोट मैंने शेयर किया था, एक बार देख लेना दो। Let me check. So whatever taught up to note 10, okay, number 10, that is I have shared all these things with you. तो मैंने 11 तक शेयर किया है, तो 11 वाला इस स्लॉट के लिए नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। 1 से 10 तक जो है, और ये ई बुक तो तुमको मिल जाएगा, ऑलरेडी है। तो अप टू 10 वट एवर इज देयर, इट इज इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरनल स्लॉट 1 एग्जाम, okay. Okay, so any more questions? So you go through those notes, okay, because all the notes have been shared, सब में पीपीटी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ई बुक जो है उसको रेफर करो,
इसके इसके बाद भी तुम्हारे पास और भी कोई नोट्स है, कोई ई बुक है, तो ऑब्वियसली यू कैन रेफर। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, सो एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, सो यू डू वन थिंग, यू स्टडी। ओके, अगर कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तुम डाउट लेकर आओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. ओके ओके ओके, सो देन थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.